So if we talk about muscle fatigue, so what actually in this muscle fatigue will happen? Like if a person is doing a heavy exercise, the exercise for a long period of time, so their muscles will lose the ability to contract. क्या करता है, अगर एक इंसान बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए एक एक्सरसाइज परफॉर्म करता है, सो देयर मसल्स लूज द एबिलिटी, उनके मसल्स क्या करते हैं, एबिलिटी को लूज कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी को, लूज द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस कंडीशन इज बेसिकली नोन एज फटीग. ठीक है, और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी को लूज करें तो दैट इज नोन एज मसल फटीग. सो इट इज़ मोस्ट लाइकली, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास इट फॉर्म द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स. लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है. Okay, accumulation of lactic acid in the muscles, and this is basically due to anaerobic respiration. क्योंकि जब हमारे पास वो ऑक्सीजन, हमने हैवी एक्सरसाइज के अंदर ऑक्सीजन लेते गए तो हमारा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया. वी कैन गेट द हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट द मोमेंट, तो वी डू परफॉर्म द एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन में जिसकी वजह से हमारे पास लैक्टिक एसिड की एजुमुलेशन हो जाती है. So not anaerobic ATP. Okay, so we can say yeah, the lowered of pH value. हम अब क्या करते हैं, हम pH वैल्यू को लोअर करते हैं, लैक्टिक एसिड की pH वैल्यू को लोअर करते हैं टू प्रिवेंट द मसल्स फाइबर रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस, ताकि मसल फाइबर हर एक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर सके. ठीक है, वी कैन से व्हेन लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस, जब लैक्टिक एसिड हमारे पास प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो बाहर जाता है, कहाँ, मसल फाइबर से निकल कर वो हमारे पास जाता है, वी कैन से लिवर के अंदर, स्टीम ऑफ द लिवर बाय द हेल्प ऑफ ब्लड. तो लैक्टिक एसिड हमारे पास कहाँ प्रेजेंट, लैक्टिक एसिड बेसिकली मसल फाइबर से निकल के कहाँ जाता है, लैक्टिक एसिड कम आउट फ्रॉम द मसल फाइबर, इट गोज टू लिवर, it goes to liver. तो liver cells can react to lactic acid. liver के पास ऐसे cells होते हैं जो lactic acid को break down करते हैं and form the glucose, और glucose की formation करते हैं. Okay, so this basically the formation of glucose require ATP and ATP production also, which is basically with the we can say availability of oxygen. जब oxygen available होगा, ATP होगी, then the lactic acid will be converted into glucose in the liver. तो therefore when a person rest, तो जब इंसान क्या करता है, जब when a person रेस्ट करता है और अक्वायर इनफ ऑक्सीजन, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अक्वायर करता है, ओके, अक्वायर इनफ ऑक्सीजन, सो द लैक्टिक एसिड क्विकली ब्रेक डाउन, तो लैक्टिक एसिड जल्दी से ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज बना लेता है, और द वी कैन से मसल्स रिटर्न्स टू नॉर्मल, और मसल्स हमारे पास नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं. So this is basically how when we don't have much oxygen, so lactic acid is assimilated, then lactic acid from the muscles fiber gone to the liver by the help of blood, and liver have some cells which require ATP, a good amount of oxygen to convert that into the glucose. So when the person rests, it basically acquire more oxygen, and suddenly at that moment the lactic acid is break down into, we can say, glucose with the help of oxygen, and the muscles returns to normal. So this is all about muscle fatigues. Now let's discuss about cramps. Okay, so what actually these cramps, wait a second, let me change the color. Yep, what actually these cramps are, a muscle cramp is basically stiffness in the muscles के अंदर stiffness आता है, muscle do not basically contract easily.
किसी भी इनवॉलेंट्री एक्शन के ज़रिए जस्ट बिकॉज ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन और वी कैन से इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वी कैन से स्टिफनेस पैदा हो जाए, पेनफुल स्टिफनेस हो जाए मसल के अंदर. Okay, in this condition, basically a person feels sudden tightening. We can say उनके muscles are basically actually relaxed. Okay, muscles cramps have several causes. Now from which things these cramps are caused? So it can be caused by overuse of मसल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना while doing exercise, injury, dehydration हो जाना. This is the main factor, dehydration. When we do have dehydration, like we are not as much as hydrated, so the cramps condition can be happen. And we can say low level of minerals like calcium, potassium, magnesium. So these are some of the factors or causes through which these cramps can be caused. With that, usually cramps are basically stretching or massaging to muscles. Mainly person used to apply the heat. Person apply heat or we can say eyes. ठीक है, आइज अप्लाई करता है तो जहाँ पे मसल्स की सूजन हो जाती है, मसल्स बिकम सोर and we get more and more fluid water to be hydrated. So these were all about muscle fatigue and cramps. I hope it is clear to you guys. Bye bye.